A very warm good evening, every single one. Good evening, good evening, good evening to my mascots of NEET 2022 and NEET 2023. Good evening. I hope each one of you is doing very well for yourself. बहुत important class है, especially उन लोगों के लिए जिनके exam के लिए now more than a year or 2 years is remaining. So all the students who are in class 11th and all the students who are presenting in class 12 are going to give the exam for NEET 2022 and 2023. Can you all hear me? Cracking sound? Is it cracking? Yes? Okay. Wait, let me just check it. Is it fine now? Good evening, everybody. Is it fine? Yes? Can you all hear me now? Is it fine? Good evening. Is it fine now? Yes, ma'am? Perfect. Perfect. Is it? Diya, that's so nice. That's so nice. Okay, chaliye. So good evening, everybody. This is a very important class for all my NEET 2022 and 2023 aspirants. It is very important. Now, ask your seniors who are going to give the exam right now. They don't have the time to study books in the last 1 month. So it is very important that their notes are very well structured. Most importantly, they should have the notes in the last 4 or 5 months, or basically last even 3-4 months, when you really have to revise 3 or 4 times, you don't have the time to make notes. You can't make notes in the last 2-3 months for your entire syllabus, but your maximum revision happens in the last 3 or 4 months. The number of cycles of revision increases. So you will make your class 11th notes now, you will make your class 12th notes now, and then in your final term it is these notes which are really going to help you. These are the notes which are really going to pave your way for grand success. How do you do it? Let me tell you in today's class. Very important session. I will not take too much time. I will just take the next 10 or 15 minutes. But in the next 10 or 15 minutes, I will make sure that all your problems, so many of you get confused. How to make notes? Should you make notes in the books? Should you underline and make notes? Should you stick yellow pages? It takes a lot of time to make notes. Your notes become very lengthy. All of these problems are going to get answered in the next 10 minutes. So just stay connected. And after the class, please make sure that you get in touch with me on Vani for Vedantu. That is my official Instagram ID. In case you have any problems, in case you personally want to ask me something. Remember, आज शाम को 9 बजे I'm going to do reproduction from the NT app. I'm going to be doing the unit wise questions. शाम को आपका mock test होने वाला है, and that, you know, how you're reading, you're writing side by side, is it the right method? क्या आपके पास आखिर में टाइम बचेगा कि आप सारे पेजेस को पलट सके? ये देखो आपने येलो पेजेस चिपकाए, but will you have so much time that you'll be able to turn the pages? How do you make notes? I'm going to tell you today. Also, tomorrow morning we have a very special class because I have a Teachers Day gift for you. I'm going to be talking about that also. Please make sure that you like, share, subscribe. You don't miss the class. I have a very important Teachers Day gift for you sharp at 10 o'clock in the morning. And guys, we do promise Vedantu improvement promise. That means अगर आप हमसे 1 साल भर पढ़ेंगे और फिर भी अगर आपकी performance improve नहीं होगी, right? So we will return back your money. नया बैच मैं मंडे को लॉन्च कर रही हूँ. My batch, one of my last batches for class 11th, you will get my classes under my mentorship. You will get my entire course for 11th. One of the last batches, 11th. Don't let physics, chemistry go. Try for 1 month. 1 महीने में आपको हजारों micro courses free मिल जाएंगे. Because of those free micro courses, you will be able to cover everything in just 1 month's time also. Notes download करके रख लीजिए. 11th का micro course मैं 6 सितंबर को शुरू कर रही हूँ नया. 12th, I'm starting 2 batches because you know the kids are asking for my classes. एक 6 सितंबर को 11th को और 6 सितंबर को 12th को my batches. Don't miss it. And KVPY की last date है 11th. You know, 16th August. So please guys, don't miss these batches, especially class 11th, 12th, 11th वालों, 12th वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये रह जाती है कि मैम 11th week है. 11th is weak and it is towards the end also. Ask any dropper, 11th is weak. Don't make the same mistake. PCB, you have a variant of English and Hindi batches. और अभी तो आपके CBSE के term 1 पे आ रहे हैं. Term 1 crash course will be given to everybody so that you can do well. KVPY is free. NEET
कि क्रैश कोर्सेज आर फ्री, ऑल ऑफ दिस इज फ्री, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री, 20 आवर्स पर वीक अलॉन्ग विद वानी मैम्स क्लासेस। आपके घरों में 14 किताबें पकड़ाई जाएंगी, डोंट मिस इट। 6 is one of the last batches. After that you might not get the batch, so please go enroll yourself now. हर 15 दिन बाद टेस्ट, हर सेशन के बाद असाइनमेंट, इन क्लास असाइनमेंट, इन क्लास डाउट्स के लिए क्लास टीचर्स, नेवर बिफोर यू वुड हैव सीन सच अ सिस्टम। After the class doubt के लिए doubt app, all of this I will tell you how to buy it. The link is in the description box. You have to remember my code, which is VD Pro. This is the price with thousands of live micro courses free, right? Please don't miss this, right? चलिए कोड याद रखिएगा VD Pro in case you want to buy it. And be KVPY. For KVPY you have to give the KVPY to see where do you stand, what exactly is the position, right? 16th I'm starting, 16th. And देखिए माइक्रो कोर्सेज, so many micro courses are available for you. So चलिए आगे बढ़ते हैं. Let me tell you what exactly are we going to do, and there's a big offer which is coming your way. I'll tell about that in tomorrow's class. Cracking NEET is difficult. It's not easy. You require the right kind of strategy, you require the right kind of knowledge, you require the right kind of guidance, you require the right kind of MCQ solving, time management. It is difficult. If you think you can just study in the last one and a half month, read some downloaded notes and you'll be able to do it, no, it's not going to happen like that. It's consistent efforts are required, but it's certainly not impossible. You need to see the word which I have used is such a nice word. You need some smart steps. Yes, you have to start on time, you have to continuously build. आपको beauty is, even if you don't remember now, it's okay. Right? Even if you don't remember now, it's absolutely fine. Nobody is asking you अभी by heart करो. But 11th में, 12th में समझ के notes बना लो so that at a later stage you can revisit. Because बाद में इतनी मोटी books you will not be able to revisit them. It is certainly difficult. It is not impossible. Yes, if you want to pass it with flying colors, you require a certain amount of planning. What is the planning? Right? Personal notes. See beta, आपने कितनी बार देखा that you've read something, but if you've not revised it, in your exam you will end up getting confused. In NEET, the syllabus is this much. It's huge, it is never ending. So if you don't see it once before, don't pass it across from your eyes, you don't revise everything, you need to see it. And tell me one more thing guys, in Vedantu, the teacher give handmade notes. Let me try and show you अगर मैंने आज handmade notes वाली class लगाई है. That's what we always do. हर class के बाद summarize करने के लिए we do give them handmade notes, and that is one reason why I'm telling you that you must have some teacher. कहीं पे तो mind maps हो आपके पास, कोई तो teacher आपको underline कराए, mind notes बनाए. You can't study in front of the screen full day. आप पढ़ सकते हो क्या बताओ? Can you study in front of the screen full day? No, you need your own notes. या तो कोई टीचर आपको क्लास में बनवा दे, या कोई टीचर आपको नोट्स बता दे कि ऐसा बनाना है, दिस इज हाउ, बिकॉज यू कैन नॉट सिट एंड स्टडी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, योर आईज विल ऑल्सो एंड अप पेनिंग, सो यू डू रिक्वायर, राइट, यू डू रिक्वायर योर हैंडमेड नोट्स. यस और नो? somebody to make these kind of notes for you, और अपने खुद के बनाए. And you've seen so this is very important. last minute revision के लिए notes चाहिए ही चाहिए होते हैं. वो मैंने आपको अपनी classes दिखाई थी, my regular classes which are going on where I was teaching. Is that clear? So you can't do the bulky notes last few days, hours, month में वो bulky books आप नहीं कर सकते. You cannot be doing those bulky books at that time. These notes are important. That is why your rank will depend on how good is the practice that you're doing right now. What you're doing right now, children, you may not be able to remember it till the examination. You still have 2 years, 1 year. Your memory will not be strong कि आज किया 2 साल बाद भी याद रहा. बट जो आज आपने नोट्स बना लिए, वो आप मान लीजिए आपका एग्जाम है सितंबर 2022 में, मान लीजिए आपका एग्जाम है अगस्त 2023 में, तो जो आज के नोट्स हैं यू कैन ऑलवेज रेफर देम बैक इन जून 2021 के जो नोट्स बनाओगे वो जून 2023 में काम आएंगे. कैसे बनाने हैं नोट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम चीजें आपके नोट्स में क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच शुड बी देयर इन योर नोट्स.
These things have to be there in your notes. No, this lecture is not for 2021. उनका lecture मैं सुबह शाम लेती हूँ. This lecture is for 2022 and 2023. And you don't have to worry about the MCQ book 22-23 because the moment 21 comes with your exams, 5 mock test papers on the new syllabus along with 2021, I'm going to be bringing out my book. So सबसे important चीज क्या है? Easily understandable during revision. Suppose how many times have you used a shortcut once? How many times? These are important points. This is point number 1 of your note making. Please make a note of this. How many times have you used a shortcut and later on आपने कुछ लिखा है but you forgot? यार ये क्या था इसका मतलब? You forgot. Did you understand? Does this happen with you? Writer, you on the chat section. Better make a like on the chat section. Does it happen? यार आज कुछ लिखा KYSZE और उसके बाद यार ये क्या सोचा था? You forgot. Don't do that. They should be very easily understandable. Don't make any funny notes and all which later on बहुत कई बच्चे होते हैं बहुत short कर देते हैं. For everything they use a mnemonic. For everything they use a shortcut. It's not easy to do it, right? At that time then you'll get confused. Don't do that. It will, if it is very easily understandable, if they are short, now time, the biggest, if you ask any qualifiers, but I'm sure Biotonics से lots and lots of students will go to the top medical colleges of our country. आप उनसे बात करके देखना. What is the most important thing they will tell you? Time is equal to marks. Simple. The more amount of time you spend studying now, the more amount of marks in your exam also, the more that you are, the faster you can do certain theory questions of physics, chemistry and bio, the more time you will get to solve the numerical based questions. And how will you reduce the time? You will reduce the time by increasing your accuracy. This is a mathematical formula which I always quote. How will you increase your accuracy? By increasing your revision cycle. So it is very important that you revise multiple times. Are you getting my point, everybody? सबसे पहले वो बहुत easily understandable होने चाहिए ताकि वो आपका time जो है वो save कर दे. बेटा उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्टकट्स और ट्रिक्स होने चाहिए. कितनी बार आपने ऐसा किया? देखो फॉर एग्जांपल वानी मैम का ट्रिक, वानी मैम ने आपको बोला है ARCS, ऑक्सिन जो है वो रूट डेवलपमेंट कराता है, साइटोकाइनिन जो है वो शूट डेवलपमेंट कराता है. जब मैंने आपको रेस्पिरेशन कराया था मैंने कहा इंस्पिरेशन में एक्सपिरेटरी मसल होती है, एक्सपिरेशन में इंस्पिरेटरी मसल होती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गौरव? Yes, so all the tricks which you learn in the class, all the shortcuts that you learn in the class, आप कई बार याद करते करते अपनी ट्रिक बना लेते हो. कितनी बार मैंने आपको बोला है कि जो आपका डीएनए होता है एग मार्क प्यूरिटी का निशान है तो प्यूरिन्स. सो ऑल द ट्रिक्स व्हिच यू लर्न, ऑल द शॉर्टकट्स व्हिच यू लर्न, व्हाट यू डू इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद योर एज इज यू कीप मेकिंग ट्रिक्स बट यू कीप राइटिंग देम एट डिफरेंट लोकेशंस. कोई 2 ट्रिक एनसीईआरटी में लिखी होंगी, 3 ट्रिक दिनेश में लिखी होंगी, 2 ट्रिक कोचिंग के नोट्स में लिखी होंगी, 2 tricks will be on some yellow page somewhere. You have to collect all the tricks and put them only in one place. All that you do is when you study multiple books, a lot of ideas come to your mind and you keep writing tricks on different things. You don't have to do it. You have to collect all the tricks of the chapter, all the formulas that you've made, all the simple, ways of remembering that you've done, and you have to put them on one side. Is that clear? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद योर नोट इज दे आर रैंडम. मान लीजिए आपको आज क्लास में करवाया जा रहा था प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, आपने नोट्स बनाए, आफ्टर दैट यू मिस्ड वन क्लास, यू डिड नॉट गो टू द स्कूल, समथिंग हैपेंड, वो टॉपिक छूट गया एंड आपका अगला टॉपिक शुरू हो गया, तो जो आपके सेकंड टॉपिक के नोट्स हैं वो शुरू हो गए. दैट मींस योर नोट्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड दे आर नॉट कंप्लीट. येस और नो? Write a yes or a no. Your notes are not arranged, and guys, just wait towards the end of the class. I have a big surprise. आपके notes incomplete होते हैं, आपके notes के topics पूरे नहीं होते हैं. आपने बीच में जेनेटिक्स शुरू किया, बोर हो गए, पेज पलट दिया, 2 पेज ब्लैंक छोड़ दिए, 2 पेज ब्लैंक के बाद आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू हो गया, 3 पेज ब्लैंक छोड़ दिए, 3 पेज ब्लैंक के बाद जेनेटिक्स फिर से शुरू हो गया. They are not arranged in a proper sequence. So when आप ऐसे notes के साथ जब रिवाइज करोगे ना, जब आप ऐसे इनकम्प्लीट नोट्स के साथ रिवाइज करोगे, योर कॉन्फिडेंस विल नेवर इंक्रीज. राइट अ यस मैम ऑन द चैट सेक्शन. योर कॉन्फिडेंस विल नेवर इंक्रीज. यू विल ऑलवेज फील यार ये तो मेरे को पूरा पढ़ाई नहीं हुआ है, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट. यू आर ऑलवेज लाइक ये तो ठीक नहीं है. राइट, योर कॉन्फिडेंस विल नॉट इंक्रीज. अगर आपने पूरा पढ़ाई किया आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, अगर आपने पूरा पढ़ाई नहीं किया आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा. Done. And never make notes from one book. That is why first reading में कभी notes नहीं बनाते. The only tip for note making,
You read NCERT 2 or 3 times. You attend my classes, my lectures, take a printout of the PDF 2 or 3 times. You underline things there. You understand. You solve MCQs. Then you collect the data and then you write from many books. You combine your NCERT, you combine Vani Ma'am's class notes, and you combine your previous year questions. You do it 2 or 3 times, 2 या 3. पहली रीडिंग में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, पहली रीडिंग में सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है. राइट यू ऑन द चैट सेक्शन. पहली रीडिंग में वन लाइक, फर्स्ट रीडिंग एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ लिखेगा वन. दैट इज माय फर्स्ट रीडिंग. यू शुड नेवर मेक नोट्स, नेवर, बिकॉज फर्स्ट रीडिंग में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट रीडिंग में लगता है अरे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, चलो जी. फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स नहीं बनाते, नेवर 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 नेवर. नोबडी मेक्स रीडिंग. आप 3 रीडिंग दीजिए, उसके बाद 2 बार एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पता चलता है. देन यू रियलाइज अच्छा इस पे क्वेश्चन आते हैं, ओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं. Then you convert them into notes. This is the way, this is the technique of note making. जो भी बच्चा फर्स्ट रीडिंग में नोट बना रहा है, थ्रो द विंडो से नोट्स आउट. इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, इट इज अ एग्जॉस्टिव प्रोसेस. यू विल नेवर बी एबल, उसमें आपने सब कुछ कॉपी कर दिया. दैट इज नॉट हाउ नोट्स हैव टू बी. Go to the first page which I wrote here. Notes should be shortcuts, tricks, points. Notes should not be paragraph. जिसने पैराग्राफ के नोट बनाए मतलब वो बच्चा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. पैराग्राफ में नोट्स कभी नहीं बनते. बोल दो यो मैम, बोल दो यो मैम. पैराग्राफ में नोट नहीं बनते. दे आर पॉइंट्स, दे आर शॉर्टकट्स, दे आर ट्रिक्स. इफ यू आर राइटिंग पैराग्राफ्स, इट हैज टू बी हैंडी. आपके पूरे बॉटनी के नोट्स इतनी सी कॉपी में आने चाहिए. द वर्ड इज हैंडी. अगर आप मोटे रजिस्टर में नोट्स बना रहे हो तो आप फिर कैसे रिवाइज करोगे? ऐसे होते हैं नोट्स, छोटे शॉर्ट पॉइंट 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 पॉइंट. दे आर वेरी हैंडी, वेरी स्मॉल, वेरी हैंडी. अगर आपके मोटे मोटे रजिस्टर्स में नोट्स बन रहे हैं, दे आर नॉट हैंडी. यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज. एंड हाउ विल यू गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम नोट्स? नोट्स आपको कॉन्फिडेंस तब देंगे अगर वो कंप्लीट होंगे. अगर आपके नोट्स इनकम्प्लीट होंगे, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. all formulas, all list, everything, they have to include everything. So you have to read your NCERT 2 or 3 times. You have to read Vani Ma'am's class notes 2 or 3 times. You have to solve previous year questions 2 or 3 times. Then you have to write down the notes. That is the technique for making good notes. Otherwise, you're just going to be wasting your time. Did you understand? How can you talk to me, Abhishek Mishra ji? You can talk to me in the class. ऐसे तो मैं फोन पे तो बात करती नहीं हूँ बेटा किसी से. आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट कर सकते हैं. सिंपल, डन. Tips to prepare notes. Start making notes when you read the chapter for the first time. You should not. सबसे बड़ी गलती, should not. सबसे बच्चे किताब खोलेंगे, नोट्स खोलेंगे, साथ साथ कॉपी करेंगे. नहीं, आप 3 बार बुक्स पढ़ो, 3 बार वानी मैम के नोट्स पढ़ो, 2 बार एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर नोट बनाओ. दैट इज द रियल नोट्स. एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, डेरिवेशंस क्लियर हो गए हैं, फिर नोट्स बनाओ. ऐसे साथ साथ फॉर्मूला मत लिखो. कई बार कई फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन नहीं आते, डेरिवेशन पे आते हैं, कई बार कई कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं. तो फिजिक्स में पहले सारे फॉर्मूला पढ़ो, उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, डेरिवेशन पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ. बायो में एटलीस्ट 3 रीडिंग लगाओ, 2 बार एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर नोट्स बनाओ. तब नोट्स बनाने का फायदा है. साथ साथ नोट्स नहीं बनाने 11th वाले 12th वाले बच्चों. इज दैट क्लियर? सबसे पहले केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सॉल्व करो. इसमें टेबल्स बनाओ, रिएक्शंस लिखो, डेरिवेशन लिखो, मिसलेनियस क्वेश्चंस लिखो. फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाओ. और फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बिकॉज उसमें तो एमसीक्यू आता है. इज दैट क्लियर? जितने भी बायो आप सॉल्व करो, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करो, दैट इज द वे, दैट इज द टेक्निक. सब बोलते हैं नोट बनाओ, नोट बनाओ, नोट बनाओ. दिस इज द टेक्निक, दिस इज अ टेक्निकल सेशन. ऐसे बनाने हैं नोट्स. फॉर बायो ऑल्सो मेक नोट ऑफ पॉइंट विच यू आर फॉरगेटिंग. कौन सी डेट्स भूल रहे हो, साइंटिस्ट के नाम भूल रहे हो, बुक्स भूल रहे हो, जो पॉइंट आप 3 बार चैप्टर पढ़ चुके हो, फिर भी आपको गलती हो रही है. ट्वाइस यू रेड द चैप्टर, यू सॉल्व्ड एमसीक्यू, स्टिल यू नो यार ये वाला पॉइंट तो मैं हर बार भूल जा रही हूं. Every time I'm forgetting this point. That is when you, and trust me guys, for this आप 1 महीना मेरे कहने पे, आई एम योर टीचर, आई एम योर एल्डर सिस्टर, आई एम योर फ्रेंड, यू ट्रस्ट मी, आप मेरे कहने पे 1 महीना प्रो मेंबरशिप ज्वाइन करो.
I'll tell you why should you join the pro membership. And just join for 1 month. 2700 रुपीज ज्यादा नहीं है बेटा. आप ये मत सोचो 2700 रुपीज ज्यादा नहीं है आप लोगों के लिए. आप एक बार सोचो, आप अपना जितना आपने राखी में कलेक्ट किया है मॉम डैड को बोलो, क्योंकि बेटा अगर आप 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए भी प्रो करोगे ना, पहले अगर आप सिर्फ 1 महीने का प्रो करोगे मान लीजिए, और ये कल लेना, टुमारो आई एम गोइंग टू अनाउंस अ वेरी बिग ऑफर ऑन माय प्रो मेंबरशिप. मेरी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है, कल लेना. अगर आप 1 महीने के लिए भी करोगे, इसमें एक तो आपकी क्लास होगी, ठीक है, इसी क्लास में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, इसी क्लास में आपको कॉन्सेप्ट पे एमसीक्यूज कराए जाएंगे, इसी क्लास में आपको कॉन्सेप्ट के डाउट्स लिए जाएंगे, और इसी क्लास में आपको कॉन्सेप्ट पे होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, और इसी क्लास में आपको टीचर के नोट्स मिलेंगे, वो भी टीचर नोट्स, और इसी क्लास में आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी. तो मतलब एक जो राइट तरीका होता है, आप एक बार सीख लो. अगर आप पूरा साल नहीं भी पढ़ सकते, एटलीस्ट लर्न. आपको पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके एमसीक्यूज कराए जाएंगे, उसके डाउट्स लिए जाते हैं, होमवर्क में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, टीचर के नोट्स और स्लाइड्स. इन सबको कंबाइन करके जो आप सेल्फ रिवाइज करके जो बनाते हो ना, अपनी लर्निंग निकालते हो, उस लर्निंग को जब आप नोट्स में डालते हो तो ये आपके नोट्स होते हैं. अगर इतना कुछ आप सेल्फ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने समझ लिया, आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, आपको जो डाउट्स आ रहे थे आपने सॉल्व कर दिए, आपने घर जाके उसके 15-20 क्वेश्चन खुद किए, फिर आपने जो आपको कोई पढ़ा रहा था या कहीं से आप पढ़ रहे थे अपने आप, आपने नोट्स लिए, उन स्लाइड्स को, इन दोनों को कंबाइन किया. इन सबको कंबाइन करके जो सेल्फ लर्निंग होती है, और जो सेल्फ लर्निंग को समझ के आप नोट्स पे लिखते हो, नॉट कॉपी. नोट्स आर नॉट कॉपीड. व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग, नोट इज नथिंग बट द एक्टिव रिकॉल. मुझे समझ में आ गया. अब मुझे अगर इसको रिवाइज करना है, हाउ विल आई रिवाइज इट? नोट्स आर योर एक्टिव रिकॉल. Are you getting my point, everybody? You can 2022 start now. So this is all, and in 1 month what you can do, it is so you can literally save your money. In that 1 month there are thousands of micro courses, हजारों micro courses हैं. इन माइक्रो कोर्स में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा पढ़ते रहो. बायो तो आप मेरे पास पढ़ रहे हो. अगर आप 12th में हो तो आप 11th की सारी फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो. अगर आप 11th की हो आप आगे की कर लो. और इन सारे माइक्रो कोर्सेज का 1 महीने में सारे नोट्स को डाउनलोड कर लो. आप इनकी वीडियोस को डाउनलोड कर लो, ताकि 1 महीने में अगर आपने 50 माइक्रो कोर्स भी किए तो इन 1 मंथ योर लर्निंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 or 6 months. That is how you will make your money count. This is the benefit, because every pro membership has unlimited access. इस 1 महीने में आप सारे KVPY के लेक्चर देख लो, इस 1 महीने में आप टर्म 1 की सारी क्लासेस देख लो, और हजारों माइक्रो कोर्स जो अवेलेबल है वो ले लो. So that once you are in the grind, you know how to make notes. Once you know what you have to do, this is how you make notes. Notes are your learning. What are you learning from it? What you understood, that when you copy it down are the notes. Now, whenever you make notes, if you write from one single pen, they will be the most boring notes on earth. And when you go back and revise them, you will not like to study them. So please, this is the tip of making. That is the technique of notes. This is the way of putting it down on paper, right? So that was the technique, that you have to read a book, you have to solve MCQs, then you need to copy down. That was the technical part of note making. This is the physical part of note making. How exactly do you need to make? It has to be colorful, goes without saying. It has to be. And you make your own shortcuts, because this is coming from your memory. Please, it is very easy to copy somebody else's. That is why I remember my examples, because they are unique to me. I know my own example. When you use your own mnemonics, when you use your own examples, you will be able to remember your own examples, right? और सबसे important बात, what mistakes you are doing, write them down. Every time I get confused here, आप exam में भी वही गलती करोगे. Write down your mistakes. Biggest beauty, जो गलती आप कर रहे हो एग्जाम में, there is a 100% chance you will repeat your mistake. 100% chance, right? And you can even make notes in your vernacular language. You can make notes like in Kannada you write something in, Marathi you write something in Odia you write something. You write something in Bengali, in your own language, whatever you are comfortable, you write them down. This is the real notes. That will be your notes. So when you follow these 4 points,
Trust me when I say this, you will now be able to make notes. Really. And this is from experience I'm saying. You could be in a very good institute, you could really be doing well, but if you don't have a teacher to explain, you don't have a teacher who has slides, who's giving you slides, and you don't know how to make your own notes, it is very important that at least for some time you join an institute so that you learn how to get into a routine. Right? It's compassion and gratitude, Gaurav. Once you get into a routine, it is very simple. It's very simple then. But you need to get into a routine. So 12th वाले mascots, 11th वालों के लिए मैंने बता दिया था VD Pro को. You also have PCB. You have full access to all the live micro courses. Class में doubts, class के बाद doubts. You learn in English. You learn in Hindi. Right? 5,000 hours of learning, 10,000 plus MCQs, and look at the price. इस 3,000 को आप into at least 50 micro courses of physics and 50 micro courses of chemistry कर सकते हो. It is really going to help you. Code आपको पता ही है, VD Pro. Wait till tomorrow. A very big offer is coming, especially for teachers. They are bringing something super duper amazing for you. In fact, there are 2 surprises. ये देखिए सारे micro courses हैं. You can join so many courses. It always keeps on going. Right, board के, NEET के, ये वो सारे courses हैं. Just learn from here and you'll be surprised how much there is. कल 2 पढ़े. I've told you I'm going to write a letter to you every week. So that letter which I'm going to write to you every week is going to come tomorrow for you. You must have seen this, right? And with a real life-changing story. Why did I become a teacher? It's a phenomenal story. I've never told this story to anybody, but a very important surprise is coming for you also. और ये मैंने पहले भी note making के lectures कराए हैं. कभी भी problem हो, just see Vani Ma'am note making and you will get so many lectures to help you here, right? And I also have, अब यहाँ पर आ जाएगा, tomorrow in the morning I have a very big gift for you also Biotonians because it is Teachers Day. It is going to be a gift for each one of you. But see, this is how you study. आपके टेस्ट होते हैं. टेस्ट में आपको पता चलता है ये बच्चे हैं जो मतलब बहुत लेट आए हैं हमारे पास. And we are trying to work on them. किस चैप्टर में आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे. The moment a child comes to us, we always take their tests. Right? ये देखिए आपकी क्लास में नोट्स टीचर पढ़ाता है, क्विजेस लेता है, अंडरलाइन करता है चीजों को. आपको दिस इज व्हाट इज नीडेड टू मेक नोट्स. यू नीड टू बी देयर इन द क्लास. आपको यू हैव टू टॉक, यू हैव टू सी कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, आप कितने क्लास में क्विजेस कर रहे हो. सी हाउ मेनी क्विजेस वी डू इन द क्लास. All of these help you remember things. So please don't forget that tomorrow in the morning, if you're looking at that 6 September वाला batch, right? तो आपको क्या करना है, होम पेज पे चलते हैं. अभी हमारा लेक्चर चल रहा होगा, राइट? यहाँ पर. सो इफ यू आर लुकिंग एट अ क्लास, प्रॉपर क्लास, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 11th और 12th के लिंक्स हैं. आप किसी पे भी क्लिक कीजिए. मान लीजिए मैंने 12th पे किया है एंड यू अप्लाई योर कोड. जस्ट डोंट डू दिस. ट्राई इट फॉर 1 month. Just try it for 1 month. And do this tomorrow because I have something super amazing coming on Teachers Day. KVPY का कोड है VKVPY, 11th का कोड है VD Pro, 12th का कोड है VD Pro. Something super amazing. But I think you should definitely एक बार try तो करना चाहिए so that you know. But अगर आप नहीं भी कर सकते, मैंने जितनी चीजें आपको आज बताई हैं, they are going to help you a lot. Also 11th और 12th आपके मैं मेन पूरे सिलेबस के टेस्ट ले रही हूँ मंडे और ट्यूसडे, whatever we have done till now. And after that you will have a 3 or 4 days holiday because 2021 को ज़्यादा पढ़ाना है. And then we will meet back on the 13th of September. So take care. Bye bye. Don't forget this code. See you at 10 o'clock in the morning. Bye guys. 22 by 23. Bye.